Agriculture in India is not just an occupation, it's a legacy that started with the dawn of the Indus Valley civilization around 900 BC. From cultivating rice and cotton to becoming world's largest producers of milk, spices and pulses, India's agricultural journey is a testament to resilience and transformation. Hello everyone, this is Prachi Tiwari for SME Futures, and today we are diving deep into the agricultural industry to understand its past, present and future. Historically, agriculture has been the backbone of India's economy. Ancient texts like the Bhumi Varga and Sanskrit scriptures categorize land into 12 types, reflecting the depth of agricultural knowledge. Post-independence, however, India faced severe food shortages, relying on imports during the 1960s. The droughts of 1965 and 1966 were turning points, leading to policy reforms and eventually the Green Revolution. Today, agriculture remains the lifeblood for nearly 46% of India's workforce. However, it contributes only 18% to the GDP. In 2023 to 24, agricultural GDP growth stands at a mere of 0.7%, much lower than India's overall GDP growth of 5.9% in the last decade. Despite these challenges, several government initiatives like the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana aim to improve water management, mitigate risk and enhance market access for farmers. But what do the farmers think? मेरा नाम जगदीश रावत है। आजकल की क्या पीढ़ी, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है। इस कारण से वो क्या है, फ़ोन पे भी देख लेती है रेट, मंडी में क्या रेट बिक रहा है, उस मंडी में क्या बिक रहा है, तो वो मंडी में जाते हैं। मंडी में जाने के बाद हम वहाँ जाके व्यापारियों से बात करते हैं। वहाँ हमारे को एक भामाशाह योजना है, उस भामाशाह योजना के लिए वहाँ किसानों को रहने की व्यवस्था भी है। वहाँ ऑक्शन होता है, तो उसमें बोलते हैं कि ये ढेरी इस भाव की है, ये ढेरी इस भाव की है। तो हमारे जो चॉइस होती है कि ये हमारा माल ये भाव बिकना चाहिए, वो भाव में हम बेचते हैं। नहीं, वो अगर नहीं बेचेंगे जिस दिन, तो उसको रख लेंगे, दूसरे दिन बेच देंगे। एक गवर्नमेंट ने क्या है, साल में एक योजना निकाली है 12,000 रुपये देने की, किसानों को 12,000 रुपये देती है। एक बीमा योजना भी आ रही है हमारे राजस्थान में। अगर खेती कर रहे हैं और खेती में अगर कोई नुकसान हो गया तो हमारे को उस पर क्लेम मिलता है, जो हमारे पैसे हमारे खाते में आ जाएंगे। आजकल हमारे को मार्केट में कीटनाशक दवाई लाते हैं, वो दवाई डाल देते हैं। हम फसल को क्या है, पहले फसल से दुगनी कर देते हैं। पहले हमारे जैसे 2 मन, किसी भी एक बीघे में 10 मन हो रहा है, आज 20 मन होने की संभावना है। और फसल हमें साल में 2 बार करते थे, आजकल फसल 3 भी कर लें, 4 भी कर लेते हैं। आजकल तो ये 60 दिन की धान भी हो जाती है। मार्केट में ले जाने के बाद माल को हम जैसे मंडी में ले जाएंगे, वहाँ मंडी में जाएंगे तो ऑक्शन में हमारा माल बिकेगा। ऑक्शन में माल बिकने के बाद हमारे को क्या है कि सरकार जो भी पैसे देगी, जो हमारे खाते में आएंगे सीधे। अब तो टेक्नोलॉजी का है, उस हिसाब से जो मशीनों से कटवाया, मशीनों से कटवाने के तुरंत मशीन में ट्रैक्टर तैयार किया, ट्रॉली में माल डाला और उसको मंडी भी ले जाते थे। और जिसको अगर ज़रूरत नहीं है तो वो माल को रोक भी सकते हैं। पहले क्या है, भाव नहीं मिलते थे, जो भी करते थे उसके बराबर हो जाते थे। अब इनकम हो रही है, इस कारण से हमारे को करने में भी चॉइस बढ़ रही है। India's population is expected to hit 1.5 billion by 2040, increasing the need for food by 2.85% annually. By 2047 to 48, food grain demand is estimated to rise to 437 million tons. To meet this demand, agricultural production must grow by 10 to 13%. But how we will achieve that? You need to understand the entire agri ecosystem, and when I say agri ecosystem, we need to understand that India has a 2 production cycle, that is Kharif and Rabi, and the production of all these crops come in 4 months, while the consumption happens over the next 8 months. That means we are on a depleting return of consumption versus demand. Then only technology can't solve the problem. You have to solve the problem by marrying the technological aspects with the physical aspects on the ground. So supply chain has to look into the entire demand supply of the commodity versus the production of the commodity versus the climatic condition of the commodity versus your methodology of solving that problem.
India always carries a buffer system for about a year or so. So that means that the expiry of the crop that you and I may think that is happening in the 6 months is not actually there. The expiry of the crop is much longer than the shelf life at which it is stored today. And because India produces 353 million tons every year of dry crops and it consumes that. So most probably what you and I are trying to say is that the consumption is mapping the production, and hence if you are able to preserve your crop for a year or a year and a half, you are very good to go in the supply chain management. The challenges are immense. Climate change contributes to disrupt crop cycles with unseasonal rains and droughts, while water scarcity remains a pressing issue. 95% of India's groundwater depletion between 2002 and 2022 happened in the northern regions. Modernizing infrastructure and managing resources sustainably will be crucial. The path to the Viksit Bharat by 2047 is lined with opportunities and challenges. With strategic planning, investment in R&D, and the integration of cutting-edge technologies, India's agriculture can transform into a global growth engine. From the roots of the past to the innovation of the future, Indian agriculture stands at a critical crossroads. The question is, how will we embrace the change? Thank you for joining me today as we explored the incredible journey, and don't forget to like, share and subscribe for more such insights.